जैसे कि आपको पता है जी, हम सीरीज जीत गए हैं और जैसे हमने 2 मैच खेले और अच्छी सी परफॉर्मेंस थी हर लड़के की तरफ से। अनफॉर्चुनेटली आज का मैच हारे, कोई मसला नहीं है। जो हमने मिस्टेक की हैं उससे हमने लर्न करना है कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं। तो जो हमारी थोड़ी सी फील्डिंग कैचिंग है उसको बेहतर करनी है, और जो बैटिंग में है वो थोड़ी पार्टनरशिप हम हमारी नहीं लगी वैसी, जो टॉप ऑर्डर की थी, जैसे हमें चाहिए था ऊपर एक पार्टनरशिप, वैसी लगी नहीं। और उसके बाद जो मेरा और वहाब भाई की पार्टनरशिप लगी, तो वो चीज़ भी हमने मिस की कि मैच फिनिश करके नहीं आया मैं। और इस चीज़ का भी दुख है। और बिल्कुल ओवरऑल क्रिकेट बहुत अच्छी हुई, जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। आपके सामने विलियमसन ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और बॉलिंग में भी उन्होंने काफ़ी अंडर प्रेशर रखा। अब देखें आप, जब ऐसी मैचेस होते हैं तो आप वो चीज़ें इससे सीखते हैं। तो हमने इस चीज़ से काफ़ी, अपने मैच से काफ़ी चीज़ें लर्न की हैं। तो कोशिश करेंगे कि अगले मैचों में ये चीज़ें ना करें। थैंक यू जी। हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं जी। रिजवान एहसान। बाबर। वालेकुम अस्सलाम। बाबर, ये वर्ल्ड सीरीज, वर्ल्ड लीग के लिए हमें इस सीरीज खेलनी थी और इसमें हम एम कर रहे थे कि हम फुल 30 पॉइंट्स से जाए। तो कितना क्रूशल है आपके ख्याल में कि ये जो हमने 10 पॉइंट क्रूशल मिल सके आज के मैच? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखें 24 मैचेस हैं, तो कहीं बिल्कुल इस चीज़ का दुख है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आगे जो सीरीज़ आएगी, जो भी वनडे की आएगी, उसमें ये चीज़ हम देखेंगे और इसके बारे में सोचेंगे कि हम जो भी मैच खेलेंगे 110% देंगे, 100% देंगे। क्योंकि आपको पता है कि हर जो मैच आप लूज़ करेंगे वो 10 पॉइंट आपके जाएंगे। तो कोशिश यही होगी कि देखें, हर मैच में आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई गलतियाँ करते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि आगे हम जीतें। कोशिश ये होगी कि हमारे शाकिर अब्बासी एंड देन आमिर प्लीज। रजा भाई, मुझे आपने कहा? रजा भाई मुझे कहा है? जी आपको कह रहा हूँ शाकिर प्लीज। शाकिर आप ही को कह रहा हूँ, शाकिर के बाद आमिर प्लीज। रजा भाई, मेरा सवाल ये है कैप्टन से कि एक तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब आउट हुए फिनिश के बहुत करीब ले जाकर, क्या मतलब क्या वो कमी थी कि आप हम देखते हैं कि बाबर आजम क्रिटिसाइज होता है कि वो बहुत अच्छा फिनिशर नहीं है। और साथ ही एक पूछना है कि सुपर ओवर में हमें कुछ स्ट्रेटेजी नजर नहीं आई। और जब इफ्तिखार आउट हुआ तो शाकिर बैट्समैन आपकी क्रीज आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। जो ही आप आउट, मैच खत्म हो जाता है। आमिर उन्होंने आमिर आप क्वेश्चन 5 कर ले, फिर शाकिर आपके पास दोबारा आते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही शाकिर। आमिर आप प्लीज क्वेश्चन करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी शाकिर, मैं आपको ही सवाल पूछने वाला था लेकिन मैं छोड़ देता हूँ बिकॉज वो आप बाद में पूछ लेगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था बाबर कि आपकी ये पहली ओडीआई कैप्टनसी का डेब्यू था, मतलब पहली सीरीज थी। तो आपके ख्याल में आप अपने को कैसा रेट करेंगे इसमें? आपने अच्छा किया, कैसे आप अपने को रेट करेंगे? बिल्कुल जी, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस आई हैं लड़कों की तरफ से। काफ़ी बैटिंग बॉलिंग, और मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ लड़कों से। काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी भी हैं। जो मिस्टेक मैंने एज अ कप्तान किया है, तो वो कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट मैचेस में ना करूँ। देखें, डे बाय डे आप चीज़ लर्न करते हैं कि आपने हर दिन कोई जो मिस्टेक होती है वो नेक्स्ट मैच में ना करें। आप फिर उस अगले मैच से सीखते हैं, फिर तीसरे में वो चीज़ नहीं करते। तो कोशिश यही होती है कि हर दिन नया सीखें, नई कोचिज से बात होती है कि कैसे क्या होना बेहतर होना चाहिए था। तो वो बिल्कुल काफ़ी चीज़ें इसमें सीखी हैं। जी, लेकिन आपको सबसे मुश्किल चीज क्या लगी है इसमें? सॉरी शाकिर प्लीज आप क्वेश्चन करिएगा, फिर हैव टू मूव ऑन प्लीज। शाकिर। बाबर, मैंने ये पूछना था कि हमने देखा सुपर ओवर में कुछ स्ट्रेटेजी टीम की बिल्कुल नजर आई। क्या आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सुपर ओवर में जाएंगे, कि पहले तो स्ट्रेटेजी बनी होती और फिर इफ्तिखार को भेजने की कोई मंतक ज्यादा समझ नहीं आई? अगर उसको आप एक्सप्लेन कर दें प्लीज। देखें, हमारे जो ये 3 जो प्लेयर हमने भेजे थे, हमने सोच समझ के भेजे थे। देखें, ये पावर हिटिंग
आपने इनको देखा T20 में भी देखें, तो हमारे ये फिनिशर प्लेयर हैं। तो हमने उसी प्लानिंग से उनको भेजा था कि वो पावर हिटिंग करते हैं, वो यूटिलाइज अच्छा करते हैं, जितना फ़खर हो गया, खुशदिल हो गया और इफ्तिखार हो गया। तो हमने ओपनर सिर्फ इफ्तिखार को भेजा था लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन बना के, तो अनफॉर्चुनेटली वो फिनिश नहीं कर पाए, कोई मसला नहीं। जी अब्दुल गफ्फार। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा, आपको मेरी वालेकुम अस्सलाम। गफ्फार आपकी मैं आवाज से नहीं आ रही। 2 सवाल करना चाहूंगा। आप मेरी आवाज, हेलो गफ्फार आपकी आवाज नहीं आ रही जी, प्लीज खुरम जी, मेरी आवाज आ रही है प्लीज रजा आप आपको? क्वेश्चन करिएगा। हेलो गफ्फार आपके इंटरनेट में कोई इशू है, आपकी आवाज नहीं हमें आ रही। प्लीज जी खुरम आप क्वेश्चन करिएगा, फिर साथ प्लीज आप क्वेश्चन करिएगा। खुरम आपका माइक म्यूट है प्लीज। जी मेरा बाबर साहब से सवाल ये है कि पाकिस्तान ने जब बॉलिंग शुरू की तो 50 पे उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, तो उसके बाद क्या आपने मैच को इजी ले लिया कि इतना ज़्यादा स्कोर बन गया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए कि वो अच्छा खेले हैं, उन्होंने फिनिश अच्छा किया है। अर्ली ऑन हमने उनको बिल्कुल अच्छी बॉलिंग की है और आपके सामने उनको हमने पकड़ के रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस फील्डिंग हुई, कैचिंग ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा टोटल कर गए। अगर हम वो फील्डिंग में कैचेस कर लेते तो मेरे ख्याल से इतना टोटल भी ना होता, तो हम उस टोटल को चेज भी ना करते। तो बिल्कुल ये देखें, हर मैच में आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आप कभी कभार बॉलिंग भी एक एक टाइम पे आके बिल्कुल आप कैसे कह रहे हैं, थोड़ी सी बॉलिंग वैसी नहीं हुई जैसे शुरू में हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल से क्रेडिट उनको भी देना चाहिए, उन्होंने अच्छा फिनिश किया। जी साथ प्लीज आप क्वेश्चन करिएगा, देन मारिया प्लीज। माइक म्यूट है आपका। आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। बाबर सवाल ये है कि आपको मुबारक हो कि 2 मैचेस आप जीते हैं, तो आखिरी मैच हार गए, बैड लक थी। लेकिन बॉलिंग के हवाले से सवाल ये है कि शाहीन अफरीदी हैं, जिस तरह पहले नसीम शाह को हम मुसलसल खिला रहे थे, वो इंजर्ड हो गए। अभी आगे हमारी दौरा न्यूजीलैंड के लिए टीम जानी है, तो कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जिन्हें मुसलसल चांस दिया जा रहा था। तो जो लड़के हैं उनको मुसलसल चांस दिया, यंग लड़के हैं, परफॉर्म करें, तो कोई खतरा नहीं होता इंजरी का कि उनको मुसलसल चांस दिया, रेस्ट दी जाए उनको कुछ मैचों के लिए? देखें, मेरे आज के मैच में शाहीन रेस्ट कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली महिम की वजह से उनको खिलाना पड़ा। देखें, आप देखें, तीनों मैचों में हमने मुख्तलिफ कम्बिनेशन से टीम खिलाई है। हम अपना बेंच स्ट्रेस चेक कर रहे थे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो खुदा न खास्ता हमारे मेन मैचेस में हमारे मेन बॉलर अगर अनफिट हो जाए, तो हमारा कौन सा जो मैच पे बॉलर बैठा है वो कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा। तो यही प्लानिंग थी कि हम तीनों मैचों में डिफरेंट अटैक के साथ जाएं। जी मारिया Thank you. प्लीज। बाबर मेरा सवाल ये है कि अभी ये तो वनडे सीरीज तो खत्म होगी, मुबारक आपको कि आप एज अ कैप्टन जो है वो पहली सीरीज जो है वो आप जीते, लेकिन आपने बहुत ज्यादा यंगस्टर्स को मौके भी दिए, डेब्यू कराया आपने इस वनडे में, और होम सीरीज बेसिकली होती है इसीलिए, तो आप T20 में भी हम एक्सपेक्ट करें कि आप यंगस्टर्स को डेब्यू कराएंगे? देखें, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, और हम कोशिश यही करते हैं कि बैलेंस टीम खिलाएं या सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन खिलाएं। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट T20 की वही टीम है जो पीछे खेलती आ रही है, और मेरे ख्याल से आप देखें, इतनी चेंजेस नहीं करते। मेरे ख्याल से 1 या 2 चेंजेस आप करते हैं और ओवरऑल, और मेरे ख्याल से आप इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं करते। शॉर्ट फॉर्मेट है और उनकी भी एक्सपीरियंस टीम है, आपने देख ली है, तो हम उसका भी देखेंगे और कोशिश ये होगी कि हमारी जो बेस्ट स्ट्रेंथ है उनको खिलाएं। जी गफ्फार प्लीज। बाबर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बीइंग अ कैप्टन आपके लिए ये जो लॉस्ट है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्या ये हार्ट ब्रेकिंग है, थोड़ा सा जिम्बाब्वे जैसी छोटी टीम से हार जाएं, या आप अपने को मोटिवेट करेंगे कि T20 सीरीज है, उसके बाद इंग्लैंड इंशाल्लाह, फिर साउथ अफ्रीका, तो ये जो हार है इसको आप खुद कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, हार जीत हो जाती है, लेकिन जिम्बाब्वे की इनएक्सपीरियंस टीम थी।
देखिए मैं डिसाइड नहीं हूँ, बिल्कुल हमने 2 मैचों में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और बिल्कुल मैं लड़कों को सपोर्ट करूँगा। हार जीत होती रहती है। देखें मैच बहुत अच्छा हुआ है। देखें शुरू में हमने बॉलिंग अच्छी की, फिनिश हमने अच्छा नहीं किया। उन्होंने स्टार्ट में अच्छा किया और फिनिश वैसा नहीं हो पाया। और लेकिन देखें सुपर ओवर में गेम गई। देखें यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है कि कभी भी चेंज हो सकती है। बिल्कुल मैं डिसाइड नहीं हूँ और बिल्कुल मैं लड़कों को बैक करूँगा और बिल्कुल जी, मैंने पहले भी बोला कि बहुत कुछ सीखा है। नया फॉर्मेट था मेरे लिए वनडे और टी20 आ गया है और बिल्कुल नए प्लेयर्स आएँगे जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं उसमें। तो टी20 की पहले भी करता आ रहा हूँ, तो बिल्कुल एन्जॉय किया मैंने वनडे की कप्तानी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। शॉन विलियम्स जिम्बाब्वे की तरफ से अभी आ रहे हैं, आप प्लीज यहीं पे रहिएगा, विद इन 2 मिनट्स वो आपको ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज। थैंक यू। Coming over. All right, gents. Sean Williams here to take all your questions. As usual, if you want to ask your question, you can text or show by raising your hand virtually. Then you can fire away. So let's get going. Yes, Moisha. Yeah, it's great to see you winning this one-day international, and now you are on the points table of the ICC Super Series points table. I mean to say, do you think this win will go a long way in boosting your morale for coming international matches? You have to play more matches at home and abroad. So, how you rate this win? I think this win is huge for us. I think obviously the first game was a close game, and then the second game not so much, and the third game we had to work hard for it. So yeah, I think it's massive for our morale. I think obviously, you know, having Blessing step up to the party, Brendan is getting some runs, and not only that, the whole team is starting to follow. So it's just only happy faces in the change room at the moment. So it's a good thing. Congratulations to you and your team on a wonderful win and the great game of cricket. Babar time that it was the beauty of game that Zimbabwe to win a thriller. Can you please tell us how you rate the overall performance of your team, and obviously that big win, as Moisha Sahab asked, that big win definitely boosts the morale of the team ahead of a T20 series. And obviously, if you rate those very crucial points of this league you got today, thank you. It's breaking up. Sorry, Abdul, you're breaking up. May you please come again? Williams, can you hear me? Yes, I can hear you now. The network is very bad. Sorry, Abdul. Let's take the next question while you try to fix your connectivity issues. Bazif Jaffa. Bazif Jaffa. Yeah, thank you very much. Hello, Sean. This is Wazir Jabbar from cricket.pk. My question to you is that you scored a brilliant century. Do you think that this was exactly the difference between the two teams, your innings or Pakistani openers throwing the game away? That was the main difference between the two sides. Look, I think obviously I came in a really tough situation and had to build a partnership with Brendan. Pakistan definitely had their chances because I think I got dropped 4 times. So I just thought I'd capitalize on that and try and build a big innings, and that's what I ended up doing. I think obviously, you know, if they'd taken their first catch, I think I was on about 12 runs. So it could be a completely different game if the fielding was better on the Pakistan side of things. Okay. Anyone else? Yes, Moyi. Drilling song. Now, Williams, do you think that in coming days you can boost on this win
And Zimbabwe, do you think is capable of delivering by beating main teams? You have beaten Pakistan now in run-up to the 2023 World Cup. Do you think that your team can beat other main teams, say like England, South Africa, New Zealand, and big teams? Yeah, definitely. I think so. I think we tired of competing, and we tired of getting beaten now. It's been way too long, and the whole mental side and the mental approach towards our game has completely changed. And I think, I know some of the young players that I've got in the change room there now, like Wesley Madaveri, which you've seen play. I think he's a remarkably good player. And I think with experience playing against these good teams will allow us to have those younger guys in the future to play and to beat the better teams around, like what you say. Not only him, there's Milton Shumba, who still hasn't had a game yet, who's in the change room. Blessing Musrabani, he's still got a long career ahead of him. So there's a lot of players still to come through the ranks. So yeah, I feel like we can, definitely. Hey Sean, Steve Vickers back home in Zimbabwe. We're celebrating here. Just a word on the sloppy fielding at the end, which could have cost us. I know it's time to celebrate, but just your thoughts on how that could have gone. Yeah, oh, look, I think it's a pressure situation. And I think, obviously, you know, a lot of people do panic under pressure. And I felt that could have been the case. But look, I'm happy that it ended up, you know, going in our favor at the end. I felt like we deserved to win that game. Our guys worked really hard today. And I think it's important that, you know, our guys will go to that particular player and like we already have, and we'll pick him up. We not want to leave one behind. So it's important that we do that. He's a main bowler for us as well. And he's going to be a senior player soon in the team. He's not only going to be a senior player here, but he is in the domestic league. So it's important for us to do something like that for him. You know, it's water under the bridge now. We've got the victory. It's done. It's gone. And now we're on to the T20s. Congrats. Well done. Thank you. Okay, Sean. Hi, Sean. Hi. Well done on your century, and congrats on the win today. Thank you. All right. You earlier talked about the mental approach to the game, but there's one thing that keeps on happening, or that has been happening in the last 3 games. The top order always capitulates. What's really going on? Is this something that is I don't know? Is it now mental or something? Is it psychological? I think, as far as I'm concerned, and what I've seen in the past, obviously the difference of speed between the bowlers is a big thing. We don't exactly have a bowler that bowls 145 k's an hour consistently. I think a lot of our bowlers will bowl the early 130s, and even in their second spell will be down to 125, maximum 129, and I think that's a big thing. Not only that, also playing under lights. You know, for example, Shaheen, world-class bowler. I mean, I think he's got the world record actually. I rate him very highly, and he came in under lights and just started swinging the ball miles. And you know, it's a difficult thing to practice, and obviously back home we don't have those facilities, so it's definitely something that we have been working on. Our coach Stuart Matsukiniri, we've got some sidearms and we've been cranking them up big time. So you know, I can definitely see improvement in the fact that the guys are handling the pace a bit better, and also the bounce. But yeah, look, I think it is an area that we can improve on. But again, you know, we've only just started doing that stuff a couple of weeks ago. So, you know, you understand what I'm saying. We've got to continue doing that and training under those circumstances so that we can improve and win games and build those big top order partnerships. Okay, once again, congratulations. Thank you. Okay. Darling,
Can I ask a question, Abdul Ghaffar? Hey, sorry, my head was not working before. Okay, Abdul. Okay, Williams, congratulations to you. Your quick Thank words. you. The first one day, and that was, and you guys were in a very good position to match that one because 4 balls, 60 runs were required. But Shaheen and Bahar changed the games. And the regret of losing that game, if you guys had won that game, it will be a series win for you. So you regret the first match lost because that was a great position from where you lost the game. Thank you. Yeah, look, I couldn't quite hear you properly, but I kind of gathering what you're saying. So, look, I think Wahab and Shaheen bowled really well. I think, like I said in the previous question there, that, you know, obviously it's new for us to come under lights, and also that twilight time here in Pakistan is very difficult. The ball does a little bit more, and Wahab was getting extra bounce, and so was Shaheen, and he was getting quite a lot of swing. And yes, I do feel we were in a very good position to win that game. And Zimbabwe in the past, we have been in many positions and many games in a position to win, and it's fallen away. And I think that's starting to change now. So a little bit more belief and a little bit more, you know, a little bit more hard work is going into things, and into training sessions and into planning and into everything. So that's sort of where we're heading. Okay, Larry, I'll give you the last question. Larry Quirirai. Hi, Sean. Congratulations on the win. It was a tense time for you in Zimbabwe. But the question I want to ask is, I saw you speaking a lot to Wesley Madevere during your batting with him. So what sort of mentorship do you give to him right there in the middle? Could you give us a little bit of insight into that? And secondly, just one more question. What is the feeling right at the end after losing that, after the ball went for 4? Was it like, oh goodness, did we just miss this? Let me start with the first question there with Wes. Yeah, I fill him up with positive things as often as I can, whether it's on the field, off the field, in the passage, in the hallway, at breakfast. I think he's an extremely good find for Zimbabwe cricket. And I think he's got a lot to offer. He didn't even bowl a ball tonight, actually. So, and when we're out in the middle there, I'm telling him to back himself. You know, he's a good puller of the ball. I said to him, if they put it in your area, you know, just let it go. And that's what we're trying to do. So that's a positive approach. I definitely was telling him that we need to build a partnership here. And we had to be clever about that and what bowler was coming on next. And we had identified who had bowled, who was coming in, and where we could run, where we couldn't run. Identified where we could score off the spinner, whether we could use our feet or not. That's sort of the stuff that I talked to Wesley about. And also pushing twos into the pockets, because obviously it's quite a big outfield here. So, and him and I feel both are quick enough to be able to challenge the fielders out in the sweepers and the long on, long off sort of side for twos and threes if we can. So that's what I'm trying to tell him. And in turn, it sort of reverses the pressure and helps you get in and you start to feel a little bit more comfortable. And yeah, when that went for 4, obviously that feeling it's a sinking feeling. But, you know, having Blessing come back and bowl, we definitely back Blessing. I thought our field placing was really good for that super over, and he did the job, and it's a fantastic thing for us. All right, ladies and gentlemen, thank you very much. We meet again during the series. Thank you.